Rohit bhai, obviously, how's the mood in the camp, the vibe? Obviously, early days in the series, but you've come after a little break. How refreshing was that? No, it's always nice to have some time off and get refreshed. Um, so of course, I'm pretty excited to be back playing. Can't wait to get the series started. It's going to be an exciting one, and at the same time, a challenging one as well, because we do understand the potential that the West Indies team has, and particularly in this particular format. They cherish playing this format, and it's going to be a challenging one for us. But yeah, at the same time, talking about our guys, I think everyone's looking, ready to go. So yeah, we'll try and work out some things and try and achieve something from this series as well, because that's always been our goal, to achieve something from the series that we play and keep moving forward. Talking about this series, how crucial is this series looking ahead at the T20 World Cup? Every series that you play is crucial. Of course, there are World Cups to look after and all of that, but every series you play for India is a crucial one, because there is something to look forward to all the time. It will be the same again for us. What we achieved in England was special, and that's done. So we just want to look forward now. And like I said, this is going to be a challenging one. Let's try and achieve something from this series as well. Going into this series, what do you make of the team composition with a couple of guys missing out, resting it out? What do you make of the team composition for the series? No, look, the composition is good. We've got a good mix of players who can cover all facets of the game. Like you said, there are a few guys who've been rested. Also keeping in mind, the workload and all of that. We just need to make sure that everyone's fresh come the World Cup. We don't want to be carrying any sort of injuries or niggles and things like that. So we are trying to manage as much as possible with all the players. I think it's important that the guys we have here now, they'll get a good opportunity to play against this team. We look forward to that challenge. हमने इंग्लैंड में देखा कि जो T20 का टेम्पलेट सडनली डिफरेंट है, आपको जब से उस सीरीज़ में देखा, जहाँ पर ये जोर है जो इंडिया अब तक क्रिकेट खेल रही थी, कंजर्वेटिव क्रिकेट खेल रही थी, क्रिटिसाइज, उसको बदलने की कोशिश है. क्या उसी लाइन पे चलेंगे या फिर कुछ और है, स्पेशली एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर में? नहीं, देखिए, हमें उनको वर्ल्ड कप का रिजल्ट नहीं मिला है. इसका मतलब ये नहीं है कि हम ख़राब क्रिकेट खेल रहे थे इतने सालों से. एंड आई डोंट अग्री कि हम कंजर्वेटिव क्रिकेट खेल रहे थे. एक आध मैच आप हार जाते हो वर्ल्ड कप में तो ऐसा लगता है कि नहीं, हम ये कर रहे थे, हम वो कर रहे थे, हमने चांसेस नहीं लिए. बट ऐसा नहीं है. आई मीन, इफ़ यू लुक एट द ओवरऑल गेम्स दैट वी प्लेड leading into the World Cup, we won probably 80% of our games. तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अगर आप कंजर्वेटिव हो तो आप इतने मैचेस कैसे जीतोगे. ठीक है, वर्ल्ड कप हार गए हम, क्वालिफाई नहीं हुए, बट ऐसा होता है. इसका मतलब ये नहीं कि हम डर के खेल रहे या हम खुल के नहीं खेल रहे. और अभी लेटली भी हमने कोई चेंजेस नहीं किया है. हम वैसे ही कर रहे, बट लोगों को थोड़ा फ्रीडम दिया गया है कि जाके खेलो अपना गेम, खुल के खेलो, कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप खुल के खेलोगे तो परफॉर्मेंसेस बाहर आएंगे. तो इसीलिए मैं बार बार यही बोलूँगा कि बाहर वाले लोग जो है उनको थोड़ा शांति रखना चाहिए. जिस तरीके से हम क्रिकेट खेल रहे, वो क्रिकेट में फेलियर्स देखने के लिए मिलेंगे, वो उसमें रिजल्ट्स हमारे फेवर में नहीं आएंगे. बट ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम कुछ सीखना चाह रहे हैं यहाँ पर और कुछ अलग करने की कोशिश करना चाह रहे हैं. तो उसमें हो सकता है हमारे से गलती हो. तो इसका मतलब ये नहीं है कि लड़के ख़राब है, टीम ख़राब है. इट्स जस्ट दैट वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू. सो उसमें कोई अलग बात नहीं है. सो हर टाइम के साथ सबको बदलना पड़ता है. हम लोग बदल रहे. आई थिंक बाहर वालों को भी थोड़ा अपना सोच बदलना पड़ेगा. रोहित, एक चीज़ जो T20 फॉर्मेट में दिखती है कि भाई जो आपको अटैकिंग लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो टीम के पास है. डेथ ओवर डिस्ट्रॉयर्स बोलते हैं आपके पास हार्दिक है, आप हुडा भी अब वैसी बैटिंग कर रहे हैं और दिनेश कार्तिक भी हैं. मिडल ओवर वाला एक जो रोल है जहाँ पर स्लो होती है, तो लगभग आपको लग रहा है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले लगभग एक टीम 1-2 पोजीशन को छोड़ दिया जाए, लगभग ये टीम सेटल है, हम कह सकते हैं? हाँ, देखिए, हमें कुछ चीज़ें, कुछ स्पॉट्स है टीम में जो हमें फिल करने हैं.
और हमको ये भी पता है कि वो फिल करने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, ये सब जो मैचेस हम खेल रहे हैं अभी, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सारी चीज़ों को एड्रेस किया जाए। और जैसे मैंने कहा कि हमें लड़कों को फ्रीडम दे के गेम खिलवाना है। हमें उनको बोलना है कि आप जाके खेलो, आपको जैसा लगता है आप खेलो। प्रिपरेशन में हम टेक्निक और उसके बारे में बात कर सकते हैं, जब मैच का टाइम आता है तो आई थिंक उनको वो छूट दिया जाना चाहिए और उनको बोला जाना चाहिए। और हम बोल रहे हैं कि आप अपना गेम खेलने की कोशिश करो, जैसे आप अपने फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं, जैसे आप अपने स्टेट के लिए खेलते हैं। तो वहाँ पे उतना प्रेशर आप लेते नहीं हो, तो यहाँ पे भी उतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स एक इंटरनेशनल क्रिकेट का डिफरेंट प्रेशर होता है, बट वही प्रेशर को हमारा काम है ये, वो प्रेशर को कम करना, और हो सकता है वो प्रेशर को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना, वो हमारे हाथ में। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लड़कों को वो एनवायरनमेंट दिया जाए जहाँ पे वो जाके खुल के अपना गेम खेले, ज़्यादा चिंता ना करे अपने परफॉर्मेंस को लेके। तो हमें वो सब चीज़ करना है, और इसीलिए काफ़ी चीज़ें मैटर करती है उस चीज़ के लिए, वो एनवायरनमेंट बनाने के लिए। तो आई थिंक हमारी कोशिश जारी है और हम कोशिश करते रहेंगे वो चीज़ को एड्रेस करते रहने के लिए। वो एनवायरनमेंट हमने देखा कि भाई, हाँ, वो एनवायरनमेंट हमने देखा वनडे सीरीज़ में जब आप नहीं भी थे, वही स्मूथ चीज़ लग ही नहीं रहा था कि इस टीम का कप्तान रोहित है या शिखर है, वो दिख रही है। आपके पुराने दोस्त ने, प्रज्ञान ओझा ने कमेंट किया कि भाई जिस तरह से तेंदुलकर और गांगुली की जोड़ी थी ओपनिंग करने से दोस्ती में बदली, आपकी और शिखर की जिस तरह की पार्टनरशिप रही है, तो वो एक दोस्ती मतलब बियॉन्ड जो फील्ड जा रही है, और वो इक्वेशन से जिस तरह से लीड कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। प्रज्ञान, मेरा सवाल नहीं है, प्रज्ञान का, आपके पुराने प्रज्ञान, हाँ, प्रज्ञान आजकल कमेंट्री करने लगा है क्या? सही है, चलो अच्छी बात है। नहीं देखिए, अब जब भी हम खेलते हैं, जो भी पार्टनर हमारे साथ बैटिंग करता है, हम कोशिश, सारे प्लेयर्स, मैं या शिखर नहीं, सारे प्लेयर्स जितने भी लोग बीच में खेलते हैं, उनकी कोशिश यही रहती है कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, और वो अंडरस्टैंडिंग इवेंचुअली एक बड़ी दोस्ती में बदल जाती है। ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड तो सारे लड़के साथ में मिलके खेलते ही है, बट ऑफ द फील्ड ऑल्सो आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट कि सारे लड़के साथ में मिलजुल कर रहे, मस्ती करते रहे, एक दूसरे की खिंचाई करें, और वही एक चीज़ है जो आई थिंक टीम का जो एनवायरनमेंट है ना, वो अच्छा बनाती है। तो हमारा एक फोकस उस चीज़ पे भी है कि हम कैसे माहौल को एकदम लाइट रखें और इन्जॉय करें, क्योंकि ऐसा मौका आपके पास बार बार नहीं आएगा लड़कों के साथ खेलने का। तो आई थिंक जब भी मौका है आप इन्जॉय करो, उस मोमेंट को चेरिश करो। Right, you mentioned sort of the challenges that this West Indies team poses in T20 cricket. If you had to pinpoint one thing that you need your team to do well to ensure you guys remain competitive, remain successful, what would that be? I think not to get complacent about what has happened in the past. It's very simple for us. We just need to focus on the present day and try and get the job done. Because if you think about, we've had some success against this team in the past and all those sort of things, it's not going to help us. So I think it's important for us to stay in the moment and try and see how we can get the job done. Because like you said, T20 cricket, it can be funny. One individual can take the game away from you on any given day. So I think you need to be prepared for that, because they've got some real match winners in their team, and they can come and just take the game away. So for us, what has happened in the past doesn't really matter. I think focus has to be on the present day when we play them, and see how we can be better. I think the goal for this team has always been how we can keep getting better as a team every day that we play. And of course we've had some success in the past of late as well, but that doesn't really matter. For us, what happens in the present and what we need to do in present matters. Rohit, one final question. The inclusion of Paddy Ogden, you have worked with him in past. Your thoughts on that? No, look, I mean, he's got so much experience working with different teams at different places. So I think his inclusion in the squad will definitely help all of us. He definitely will bring the mental side of the game into the picture, and I think he's worked with the Indian team before. For a few years he was there, part of 2011 winning World Cup team, and he's had some success with a lot of franchise cricket when he's been part of it. So I think he's got the experience. He knows a lot of our players as well. He's worked with them closely. So I think the mental side of the game
as we know, it's very, very important. So, with his experience, with his ideology, I think it's going to help us. So I think it was a great move, to bring him in, and let's see, what happens in the next few months. He'll obviously, it's been his second or third day now with the team, so he's probably just observing a lot of the guys who he hasn't worked with, and I'm sure he'll start his work. He'll start talking to the players and get their thoughts as well. And yeah, I think we are very excited to have him in the squad, and I genuinely feel that he can make a difference in this